नमस्कार दोस्तों, आपका रियल डिफेंस में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बलूचिस्तान की कैसे कब्जा किया गया। क्या बलूचिस्तान आज़ादी के वक्त भारत के साथ आना चाहता था? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। आज हम एक बलूच एक्टिविस्ट से जानेंगे कि बलूचिस्तान की क्या रही हिस्ट्री, बलूचिस्तान पर कैसे कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई हर एक वीडियो का लाभ आप सबसे पहले ले सकें। I have to explain to you why I call it a country of Balochistan. You see, on August 14th, 1947, when Pakistan was declared as a country and India decided to be independent on the following day, August 15th, very few people in India or Pakistan, let alone Bangladesh, know that 3 days prior to that, Britain had given independence to another country, and this country was the Kalat state of Balochistan, larger than, I would say, France in territory, definitely more area than Italy, or I would say even Burma at that time. Huge tract of land that had been independent for over a thousand years, and only came under British occupation in 1839 or so. I might be off a few years here and there. It had nothing to do with Delhi. It had nothing to do with the Raj, which means Balochistan, like Nepal or Ceylon at that time, were directly connected with Whitehall in London and had separate treaties. So Balochistan, now look at the irony of this all. The Khan of Kalat hired who to negotiate for its independence? They paid Muhammad Ali Jinnah, that same Bombay lawyer who had earlier run away with his friend's daughter. I just throw that in to tell people who call him Qaid-e-Azam that the guy was a pedophile. A 16-year-old girl was kidnapped by him, taken away, and not till 18 she got married. So the same man who, instead of working for his Bombay constituents, was working with the British to cut India into 3 pieces, was working for the country of Kalat and got independence for them through the Cripps Commission. And so on August 11, a country of Balochistan became independent. The New York Times, none other than that, in its news story on the front page, describes it as India, Pakistan, and Balochistan as the 3 countries that emerged out of this. Muhammad Ali Jinnah, by the way, took some money from the Khan of Kalat for his services. And you know what sort of a person he was? Oh, the great Qaid-e-Azam. He sat on a tarazu, a scale, and said, fill the other part with gold. So this thin, starving, super intellectual, anglicized voice, never went to college or university, sat on one side, put gold on the other, and when the scale was balanced, that 90 pounds of gold bullion was given to Muhammad Ali Jinnah as his legal fees. So what did Mr. Jinnah do? He called his sister, Fatma Jinnah. Fatu, come here. So Fatu came. You also sit over here. And as a concession to the Baloch, said, weigh her in silver. So Fatma, I think Fatma Jinnah maybe must have weighed about 85 pounds. She took 85 pounds of silver, which Muhammad Ali Jinnah grabbed. And that is how Balochistan got paid for its independence to the Qaid-e-Azam, the great Muslim leader of India, who was selflessly working for the ordinary people of Hindustan to give them a country of their own. Now, he was selling us right, left, and center and enriching his pockets. That aside, we'll discuss Jinnah's financial dealings and how he robbed Pakistan of some other time.
Thus, Balochistan was born. Balochistan had an embassy in Karachi and in New Delhi. It was an independent country the same way as Nepal or Sri Lanka today are, or Bhutan are. But, and this is where India is to be blamed, the leaders of Balochistan, Abdus Samad Achakzai, a member of the Congress elected from Quetta, along with Mir Hosplex Bizinjo, who was chair of the lower house of the Balochistan parliament, who had all voted for an independent Balochistan, went to Delhi and met with Maulana Azad, Jawaharlal Nehru, and guess who? Sir Krishna Menon, and said, we as Balochistan would like to join India, the Dominion of India, or the Republic of India, as one country. First of all, Maulana Azad thought that these Muslims from faraway lands who couldn't speak fluent Urdu were not worthy of being considered Indian Muslims. I'm not exaggerating, this is a fact. He never thought Sindhis or Pashtuns or Punjabi Muslims or Bengali Muslims were worth anything. He just considered UP, Bihar, Urdu-speaking, Hindi-speaking Muslims as the pure, A-grade Muslim. Instead of accepting the offer of accommodating and accepting Balochistan as a part of India, they told Mr. Bizinjo, who was junior at that time, and I heard it directly from me, Bizinjo, that ये तो इतना दूर है India से, कैसे होगा? It's so far away from India, how will we manage it? To which Mr. Bizinjo said, the distance between Karachi and East Pakistan is 1,200 miles. The distance between India's border in Rajasthan and Balochistan is 200 miles. If Karachi can govern East Pakistan, India has a problem accessing Balochistan. No, they didn't want these tribal sort of uncouth, uncivilized Muslims as part of India who didn't speak Urdu. So instead of simply saying no and letting them go in a confidential meeting, somebody leaked out the news to PTI, who issued a statement from the government of India denying that the government of India had met with the leaders of Balochistan, which was a signal to the government of Pakistan that the leaders of Balochistan had in fact met Mr. Nehru. This was March 1948. Do you know what happened the next day? The Pakistan army invaded Kalat, overtook the capital, took the ruler as prisoner, and since then has been occupying Balochistan. Why? Because some cowards in Delhi just couldn't understand the value of Balochistan. Even Gwadar, which was at that time the property of the Sultanate of Oman, whose ruler, incidentally, very pro-Indian, Sultan Qaboos, just recently passed away. They offered the port of Gwadar to India for a pittance, maybe $1 million or something. What did India do? No. We don't need. Today, that same port is a naval base for China, targeting India. And to counter that, India has to go to Iran to create the Chabahar port and invest over there for the mistakes made by very narrow-minded people right at the top in Delhi. So Balochistan, because of Indian leadership's poor handling and leaking of secret information, is today, for the last 70 years, fighting for its independence. They fought in the war in 1948. In 1963, Shero Murray, more popularly known at that time as General Shroff, he conducted. In 1968, there was another war. In 1972,
After the defeat of the Pakistan army in Bangladesh, Prime Minister Indira Gandhi freed these troops, and all of them went back to Balochistan, where they started another war against Baloch. Arrested the chief minister, arrested the governor, everybody. For 5 years there was a war of independence. This current independence war, led by Dr. Allah Nazar, a medical student in the hills of Balochistan, is from 2005, when another Indian, General Musharraf, who came to Pakistan, assassinated Nawab Akbar Bhutto. All of that is happening in your neighborhood. ये थे तारिक फतेह, जो एक बलोच एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ सिद्ध एक्टिविस्ट थे और एक ऑथर और थिंकर हैं। तारिक फतेह को कई प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से ये कई बार जेल जा चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बलोची की फ्रीडम के लिए समर्पित की है। वे अभी कनाडा में रहते हैं और कैनेडियन सिटीजन हैं। तारिक फतेह की स्पीचेस पर पाकिस्तान में बैन है। कुछ लोगों को ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो उन लोगों के लिए और एक प्रूफ भी मौजूद है। इस प्रूफ में एक प्रॉपर पाकिस्तानी सिटीजन आपको बताएगा कि बलोचों पर कैसे और कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं। कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और खान ऑफ कल्लात जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी असेंबली में डिस्कशन करेंगे और कंसेंसस के बाद हम कोई ऐलान करेंगे। और जब वो डिस्कशन शुरू हुई, अभी वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला था कि कोयटा से एक जर्नैल साहब जो हैं उनको ऑर्डर मिला और उन्होंने कल्लात पर हमला कर दिया और 1948 में आपने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके आपने जबरदस्ती इल्हाक की दस्तावेज पे दस्तखत करवा लिए। तो ये पहला फौजी ऑपरेशन था, और उस फौजी ऑपरेशन के खिलाफ जब मुजाहमत शुरू की खान ऑफ कल्लात के भाई प्रिंस करीम ने, तो प्रिंस करीम को पहाड़ों से नीचे उतारने के लिए कुरान पाक का सहारा लिया गया और कहा गया कि अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वो नीचे आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1955 में जब हमने 1 यूनिट बनाया, तो उस 1 यूनिट के खिलाफ मुजाहमत हुई, और वही जो खान ऑफ कल्लात थे और प्रिंस करीम थे, उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि बलोचिस्तान को उसका जो तशख्खुस है वो दे दिया जाए, बलोचिस्तान को एक अलहदा सूबा तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन नहीं हुआ, और फिर 1958 में दोबारा एक फौजी ऑपरेशन हुआ, और कल्लात की जो जामिया मस्जिद है उसके मस्जिद के मीनार पे जो कल्लात का परचम लहरा रहा था, उस परचम को गिराने के लिए उस मस्जिद पर बमबारी की गई, और जब वो मस्जिद तबाह हो गई तो फिर नवाब नरोज खान ने एक दूसरी मुजाहमत शुरू की। एक दफा फिर नवाब नरोज खान, जिनकी उम्र 90 साल थी, उनको पहाड़ों से नीचे उतारने के लिए एक दफा फिर कुरान पाक का सहारा लिया गया। एक दफा फिर उस वक्त कर्नल टिक्का खान थे, जो बाद में जनरल टिक्का खान बने, उन्होंने नवाब नरोज खान के साथ धोखा किया, गिरफ्तार किया, और उसके बाद जैसा कि बैरिस्टर बाचा आपको बता रहे थे कि उनके बेटों को फांसी दे दी गई और उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई। तो ये बार बार कुरान पाक को बीच में लाके आपने बलोचों के साथ धोखा किया, ये बात पंजाब के लोगों को नहीं पता। ये आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब ही में सबसे ज्यादा जो है इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान के लंबरदार हैं। उनको ये बताने की जरूरत है कि आपके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बलोचों के साथ कुरान पाक के नाम पर कौन कौन से धोखे किए हैं, और ये वो तारीख है ये वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि लोगों को पता चले बलोचियों की हालत के बारे में। हालांकि ये सब बातें कुछ लोगों को पता होगी और कुछ को नहीं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले बलोचिस्तान के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको बलोचों और उनके मुखिया पर हुए जुल्म के बारे में दिखाऊंगा, वो भी बलोचों और उनके मुखियाओं की जुबान से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।